हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर और आज कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे वो रिजल्ट कह क्या रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में 6 रिजल्ट्स लिख लिए थे। और जो हमने लास्ट रिजल्ट लिखा था वो ये लिखा था कि द मिनिमल पॉलिनोमियल, जो रिजल्ट 6 हमारे पास था वो ये था कि द मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक। द minimal polynomial of a matrix is unique. तो लेट्स सी सम अनदर रिजल्ट्स, है ना। और कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं। तो रिजल्ट नंबर 7, रिजल्ट 7, लेट अस राइट हियर। रिजल्ट 7 इज व्हाट सेइंग, इट्स सेइंग कि दैट कि if mx is the minimal polynomial and fx is any annihilating polynomial of the matrix, then mx must be divided fx. Okay, so this is the result if mx is if mx is the minimal polynomial annihilating polynomial मतलब वो मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है ना। if mx is the minimal polynomial and of a matrix A, of a matrix A, and this fx be an annihilating polynomial, polynomial of polynomial, then this mx divides because mx is the minimal polynomial which is the annihilating polynomial for the a, है ना, of the minimum degree, है ना। it divides fx. So from here we know that कि जो characteristic polynomial होता है that is also a annihilating polynomial for a. पहले हैमिल्टन थ्योरम हमने पढ़ी थी कि every characteristic polynomial is satisfied by its matrix. Okay, so if mx is the minimal polynomial for a, then mx will also divide its characteristic polynomial. Okay, so you can just also write this result in another way. So I'm just writing here if fx is if fx is a polynomial, if fx is a polynomial such that this is fa is just equal to 0. It means uh, zero matrix, है ना। It means fx is the annihilating polynomial का मतलब यही होता है ना, fx is the annihilating polynomial. Okay, and if this mx is the minimal polynomial minimal polynomial of a, then there exists a polynomial qx such that we can say such that we can factorize this fx into mx into qx. So this fx is just equal to mx into
Okay, so this is the, it means that minimal polynomial divides its every annihilating polynomial of A. Okay, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट नंबर 8, एट्थ रिजल्ट। तो इट इज, अब इससे हमारे पास एक चीज मिल गई, क्लियर हो गई कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज डिवाइड इज मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिवाइड इज मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके, सॉरी, एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, so you can just see here the minimal polynomial of a matrix। क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, और मिनिमल पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट, वो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड, हर एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आती है। तो द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड्स डिवाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिवाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी result 9। So what the result 9 is saying, कि let this mx and cx तो दूसरे पेज में लिखते हैं लोग। स्क्रॉल नहीं होता क्या? यहाँ पर we have to do दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस सी अनदर पेज। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो वी हैव जस्ट डन 8 रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 9 लिखते हैं। तो रिजल्ट 9 क्या कहता है कि let mx and cx denotes the minimal polynomial minimal and that is equal characteristic polynomial of a matrix respectively
then this mx and cx have the same distinct linear factors. The same distinct linear factors. Okay. क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि जो एम एक्स है दैट डिवाइड सी एक्स, है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है. So definitely they have the same distinct linear factors. Okay, so let mx and cx denote the minimal and the characteristic polynomial of a matrix respectively. Then mx and cx have the same distinct linear factors. तभी वो डिवाइड कर पाएंगे. अगर डिफरेंट हो गए तो लीनियर फैक्टर्स वो डिविजिबल ही नहीं होगा mx बाय mx से cx, है ना. तो इसका मतलब सेम लीनियर फैक्टर्स होनी चाहिए. तो यू कैन जस्ट से हियर, if I'm just saying कि हमारे पास जो cx है, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है, दैट इज योर x माइनस ए वन की पावर अल्फा वन एंड x माइनस ए टू की पावर अल्फा टू एंड सो ऑन. दिस इज योर x माइनस ए के की पावर अल्फा. ओके, then this mx is not, then mx is of of the form, mx is of the form somewhere this is your x minus, ये लीनियर सारे लीनियर फैक्टर्स होंगे तो x माइनस ए वन की पावर सब हम टेकिंग बीटा वन, है ना. एंड दिस इज योर x माइनस ए टू की पावर, दिस इज योर बीटा टू एंड अप टू दिस इज योर x माइनस ए के. सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर होंगे mx के अंदर. हाँ, देयर एक्सपोनेंट्स में बी डिफरेंट. दिस इज योर बीटा. Okay, so clearly this because this am is divides because am is divides this mx is divides cx, so definitely the linear factors के जो exponents है that will be less or equal to the exponents of the cx. Okay, so it means that where we can just say where this is beta I is less or equal to alpha I and greater or equal to 1. Okay, so the linear factors in the mx and cx will be same. Okay, next result की बात करते हैं. Result number 10. let mx let mx and cx, mx and cx denotes we know that minimal polynomial and characteristic polynomial. The minimal polynomial and characteristic polynomial of n by n matrix respectively. So then this cx, because we have in mx and cx there are equal same linear factors. Okay, so this cx will divide, it divides mx की होल पावर n. अगर उसका जो पावर है, जितना उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उतना अगर हम पावर कर देते हैं तो डेफिनेटली दिस cx विल बी डिवाइड दिस. ओके. ओके, so this is the result. Next result 11.
a scalar lambda is eigenvalue an eigenvalue of a matrix A if and only if lambda is a root of the minimal polynomial. Polynomial of A. Okay, so if lambda is the scalar lambda is the eigenvalue of a matrix A, if and only if it is the root of the minimal polynomial. Okay. Next result, let's try the next result number 12. So we have a matrix. A matrix is singular if and only if uh, uh, there is no constant term in the minimal polynomial, because constant term होगा तो जो लेमडा जो जीरो आइगन वैल्यू होगी वो वहां पर नहीं होगी। और अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जीरो है, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म नहीं है वहां पर मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर, इसका मतलब इक्वल लेमडा इक्वल टू जीरो इज द आइगन वैल्यू। अगर लेमडा इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू तो उसका डिटरमिनेंट जीरो इट मीन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ the constant term the constant term in the minimal polynomial and the characteristic polynomial is zero। constant term वहां पर नहीं। ओके। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 13। तो रिजल्ट 12 क्या पढ़ा? मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ the constant term in the minimal polynomial and the characteristic polynomial is zero। रिजल्ट 13 क्या कहता है कि this is a matrix is non-singular a matrix is non-singular। it's a basic result जो you know previous slide want this is previous slide, you can take a screenshot of it। okay, then I'm moving for the next page। okay, so 13th result is it that a matrix is non-singular if and only if and only if constant term if and only if the constant term in the minimal polynomial it exists, yeah, you can say non-zero।
characteristic polynomial. It's non-zero. Okay. नेक्स्ट रिजल्ट 14। तो अब इसकी बात है, अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो इट मीन दैट कि वो जो मैट्रिक्स रही होगी दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लेट्स रिजल्ट नंबर 14। फॉर द रिजल्ट 14 इज सेइंग कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मिनिमल पॉलिनोमियल of a matrix is of degree 1 if and only if the matrix is a scalar matrix। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ डिग्री 1 इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 तभी होगी एक ही केस में, अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास किसी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 नहीं होगी, डिग्री हमारे पास मोर देन 1 होगी इफ द ऑर्डर इज मोर देन 1। ओके, so this is your minimal polynomial of matrix is degree 1 if and only if the matrix is scalar matrix। okay, uh, यहाँ पर रिमार्क में भी लिख लीजिए कि मोर देन 1 होगा, अगर हमारे पास ऑर्डर मोर देन 1 है तो उसका डिग्री हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो यू कैन से हियर द डिग्री द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ नॉन स्केलर matrix that is greater equal to clear। One other result number 15 we are going to write here that a matrix is diagonalizable if and only if this is important result, you can just make it a star। R15, a matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomial its minimal polynomial has no repeated linear factor। इट मीन दैट कि लीनियर फैक्टर्स सारे के सारे जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो उनका जो डिग्री है वो 1 ही है ना। मतलब इट मीन दैट कि लीनियर फैक्टर्स में जो एक्सपोनेंट्स हैं ना, एक से दो बार रिपीट नहीं हुई। ठीक है, तो a matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomial has no repeated linear factor। So you can just see here, you can say all the factors must be
with single power in mx. क्लियर? तो दिस इज रिजल्ट 15, द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। हमेशा जब आप लिखे ठीक है, फिर रिजल्ट नंबर 16। तो अगर हम मिनिमल पॉलिनॉमियल किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं और उसके सारे लीनियर फैक्टर्स की जो पावर है वो हमारे पास वन ही है, या कह सकते हो नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्टर्स मस्ट बी अ सिंगल पावर इन एम एक्स। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल रही होगी, और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो डेफिनेटली उसके मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। लेट्स रिजल्ट 16 अबाउट द इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो if a square matrix if a square matrix A ये satisfies any of the relation, that is your a to power k इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। दूसरा है कि दिस a to power k इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी, निगेटिव आ रहा है। या फिर हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि a की पावर k हम कर रहे हैं, वी विल गेट a अगेन एंड निगेटिव ऑफ k। तो दे आर सेइंग कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो इनमें से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करती है ना। इफ हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ए की पावर के हम कर रहे हैं, आफ्टर स्टेज इज गेट वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आफ्टर any exponent of a we will get negative of identity matrix, the same matrix is negative of that matrix. So where you can just say कि k is any integer where k is some positive integer greater than, then this matrix is always diagonalizable over C. Then the matrix E is always diagonalizable over। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये तीन चारों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करती है तो डेफिनेटली दैट मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट नेक्स्ट। ओके, so uh, you can write a remark here that whenever a matrix relation is given, whenever a matrix relation is given, लास्ट वन रिलेशन इज सेइंग दैट कि हमारे पास if a matrix we have a square matrix and which satisfies these conditions, है ना। if a square matrix A satisfies any of the relation a की power k is equals to I and a की power k is equals to minus of I, मतलब after a positive integral power of A we get some matrices।
A itself or negative of A, or identity or negative of identity. In that case, this A must be diagonalizable over C, है ना, वो हमारी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर C रही होगी, है ना, तभी ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इफ दिस कंडीशन आर होल्ड्स, द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर। नेक्स्ट we can just move the next step. So we are writing a remark here uh, on the behalf of the previous theorem or result. Whenever a matrix relation is given, I'm just writing it. The suppose that we have if I'm just squaring, we will get A again, है ना। तो यू नो दैट कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, जैसे सम नेम आल्सो ए क्यूब एन इज इक्वल टू ए अगर मैट्रिक्स बन गई, या ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी बन गया, इस तरीके के अगर हमारे पास रिलेशन आते हैं, सपोज दैट, देन 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 such type of the problem we solved by using mx। तो इजीली हम mx लिख पाएंगे बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, होगी डायगोनलाइजेबल होगी। और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी तो हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि इफ इफ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, आप रिजल्ट ये वाला देखिए 15th वाला, a matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomial has no repeated linear factors, है ना, all factors must be with single powers in mx। so if we know the eigenvalues, if we know eigenvalues, you can able to write the minimal polynomial, if there is required we will solve by using the mx, है ना, minimal polynomial thing। okay, so this is about the result 16। Let us write the result number 17, which is based on the product of two matrices। Okay. So if the fixed matrix M is diagonalizable, so the fixed matrix M is diagonalizable, then the linear factor, then the linear operator T, which is Mn to Mnr, defined by T A is equals to M times of A, ऐसे डिफाइन करा। इफ एम इज अ फिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, मतलब एक हमने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ले लिया और एक लीनियर ऑपरेटर हमने बनाया, then the linear operator T mnr to mnr, and is defined like this, this is T A is equals to M into A। okay, and we can also another linear operator which is defined like this, T is equals to A यहाँ पर अब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा, मतलब M यहाँ लेफ्ट करा था, यहाँ पर राइट में मल्टीप्लाई करा, आर बोथ डायगोनलाइजेबल।
इस रिजल्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी है CSIR नेट के अंदर। ओके, तो इस रिजल्ट को आप दिमाग में रखिएगा कि अगर हमारे पास m कोई डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है और एक लेफ्ट या राइट से अगर मल्टीप्लाई करके एक लीनियर ऑपरेटर हम बनाते हैं, तो वो लीनियर ऑपरेटर हमारे पास डायगोनालाइजेबल होते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स जो बनेगी दैट इज अगेन अ डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? प्लीज लेट मी नो, मैसेज करिए प्लीज। ओके, तो तो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो कंटेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके,